ठीक है। सो हमारे साथ हमारी टीचर कोऑर्डिनेटर राजकुमारी पांडे मैम भी जुड़ चुकी हैं। वेलकम मैम। नमस्कार सभी को। मॉर्निंग मैम। नमस्कार मैम। So, So ठीक है। Chandrakant sir, I think we should start. या कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू। A creative voice is the most powerful sound in this world. रचनात्मक आवाज इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली आवाज है। A very warm good afternoon to one and all present here. I, Sharanyam, And I, Aryan, find immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of the Cultural Committee of P.G.D.A.V Evening College. We both are feeling extremely privileged in guiding you throughout this event. Here, we are gathered for Sarjana, the creative speaking competition organized under FALAK 2022, the annual cultural event of our college. The galaxy of intellectuals, your excellencies, judges, and my dear friends, how different is this afternoon? You will yourself discover as the creative colors of this event unfold. Before welcoming our respected dignitaries, Aryan, would you please brief us a bit about Falak? बिल्कुल। फलक दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध वार्षिक आयोजनों में से एक है। यह पूरे भारत के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, चाहे वह बोलना, वाद विवाद, गायन, नृत्य, प्रश्नोत्तरी, कविता, कला आदि हो। Thank you so much, Aryan, for the introduction. Falak is indeed one of the most prestigious annual events of Delhi University, organized by P.G.D.A.V College Evening. It provides a plethora of opportunities to students from all over India to showcase their talents as well as enhance their skills in different fields, be it speaking, debating, singing, dancing, poetry, quizzing, art and craft, and many more. मैं अब सांस्कृतिक समिति की संयोजिका उदिता अग्रवाल मैम को अपने विचारों से हमें प्रबुद्ध करने के लिए आमंत्रित करने का सम्मान प्राप्त करना चाहूंगा। मैम आपका माइक ऑफ है। आपका माइक ऑन नहीं है मैम। Sorry. धन्यवाद शरण्यम and Aryan. You have started the event very well. मैं इस प्रतियोगिता में आए सभी जो हमारे डिफरेंट कॉलेजेस से जो आए हैं प्रतिभागी, उन सबका पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग में स्वागत करती हूँ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर. बट दिस इवेंट इज गोइंग अंडर पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग फलक. And thanks to all the participants for participating in this event. मैं टीम फलक को, टीम एथेना को और ये टीम सर्जना को शुभकामनाएं देती हूँ. ऑल द बेस्ट फॉर योर इवेंट. सिद्धार्थ जी यहाँ पर हैं एंड चंद्रकांत जी हैं, राजकुमारी जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो इस इवेंट के जजेस हैं डॉक्टर मयंक पांडे एंड डॉक्टर जयशंकर शर्मा, दोनों का को बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए. ऑल द बेस्ट एंड प्लीज स्टार्ट. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you, ma'am. Your words are truly a source of inspiration. May you continue to shower your blessings upon all of us. Now I'd like to introduce the judges for today's event, beginning with Dr. Mayank Pandey sir, Assistant Professor, Department of Environmental Studies. Sir is a man of distinct vision and illuminating ideas, an idol of knowledge and a seasoned scholar. We also have with us Dr. Jaisankar Sharma, Assistant Professor, Department of Commerce. Sir has a very joyous and lively nature, and his vibrant personality never fails to influence us. I once again heartily welcome both our honorable judges. Now,
I would like to present the rules of the event. Beginning with, each participant will be shown a picture or an image. Participants are required to present their creative thoughts in relation to the picture or a creative story or incident based on the picture. The time limit for speaking is minimum 2 minutes and maximum of 2.5 minutes. Exceeding the time limit would lead to deduction in points. The medium of speech can either be Hindi or English. However, one medium should be maintained throughout the presentation. Participants are strictly advised to refrain from using inappropriate or unparliamentary language. It is compulsory for the participants to turn on their camera while speaking. So, since it's a bilingual event, I would like to invite Aryan to present the rules in Hindi. प्रत्येक प्रतिभागी को एक चित्र प्रदर्शित किया जाएगा जिस पर विचार करने के लिए ठीक 2 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रतिभागियों को चित्र पर आत्ममंथन कर अपने सृजनात्मक भाव तथा विचार प्रस्तुत करने हैं। प्रस्तुति के दौरान कृपया अपना माइक तथा वीडियो ऑन रखें। प्रस्तुति का समय 2 से 2.5 मिनट है, अतः समय सीमा का ध्यान रखें। प्रस्तुति का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी है, अतः प्रस्तुति के दौरान भाषाई समानता बनाए रखें। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वह असंसदीय व्यवहार का अनुकरण न करें। I definitely sense some turbulence around here. Well, the heartbeats have definitely gone up. Now, I would now humbly request our judges to grant us the permission to commence the program. Yes, I am ready. Yes, go ahead. Please start the program. Thank you, judges. So without wasting any more of your time, I would like to invite the first participant for today's event. Slot number 1, Rohan. I hope the screen is visible, Aryan. Yes, it's visible. Rohan, are you present here? I think slot number 1 is not available at the moment. So we will proceed to the slot number 2, Harsh Pandey. Surname, please, slide 2. जी You may continue, Harsh. दरअसल मुझे व्हाट्सएप पे भेजा गया जो तस्वीर है वो दूसरी है। Okay, I'll see to it, Harsh. Just a minute. आराम से बेटा, आराम से करें। I hope this is your picture, Harsh. The screen is not visible, surname. Yeah. जी जी दे रहा हूँ जी, एक बार कर हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी। जी जी। जो देखा गया वो माना गया, झूठ को भी सच माना गया। तस्वीर में आप एक दृश्य देख पा रहे हैं जिसमें एक आदमी दौड़ता हुआ दिख रहा है और उसके पीछे जो आदमी है वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में एक ऐसा एक चाकू जैसा कुछ बना हुआ है और जिसे हम देख पा रहे हैं कि सामने किस प्रकार स्क्रीन पर से वो चित्र को दिखाया जा रहा है, जिसके कुछ हिस्से को हमारे सामने दिखाया जा रहा है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसे मीडिया हम कहते हैं और सिनेमा जो समाज का दर्पण होता है, अर्थात जो हमें दिखाया जाता है हम उसे देखते हैं। यहाँ पर दृश्य और अदृश्य दो पैमाने हैं।
दृश्य वो जो हम देख रहे हैं और अदृश्य वो जो कि सत्यता को बाधक के रूप में काम कर रही है। मीडिया जिस प्रकार हम काम कर रहे हैं, मीडिया का काम होता है कि जिसका सिद्धांत है सब कुछ सही सही दिखाना, लेकिन घर में बैठे हुए जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या देख रहे हैं? जो उन्हें दिखाया जा रहा है वास्तव में यहां पर इस चित्र में जिसके हाथ में एक शस्त्र है वो नहीं दिखाया जा रहा है, जिससे यह लग रहा है कि पांव जो कि एक नुकीले आकार में बना हुआ है और जो आदमी पीछे से उसके पीछे दौड़ रहा है उसे मारने की कोशिश की जा रही है, ऐसा स्क्रीन पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि जो मानव जिसे सत्य मान लेता है वो वास्तव में क्या सत्य है ये जरूरी नहीं है। समाज में बढ़ते अपराध और अपराधों के बीच जो अपराधों के पीछे सत्यता है वो यहीं पर आकर खत्म हो जाती है कि वास्तव में हमारे देश की मीडिया क्या हमें दिखा रही है और उस पर क्या मीडिया ट्रायल शुरू हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो वास्तव में सत्यता है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है और वो बौनी प्रतीत होती है। तो दिखाए गए इस दिखाए गए इस चित्र से हमें यह साफ तौर पर देखने को मिलता है कि जो चाहे वो विभिन्न केसेस को आप देखें जहां पर मीडिया जो दिखाती है या फिर जो हमें घर में बैठकर हम देखते हैं उससे ऐसा लगता है कि यही सही है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या हो सकता है यहां पर यह देखने का प्रयास है। अर्थात हमें जागरूक करने का यहां पर मापदंड तय किया गया है कि जो घर में बैठकर टीवी पर हम देख रहे हैं हमेशा वो सही हो ये जरूरी नहीं है। तो दिए गए चित्र में ये दो चीजें हैं जिसको लाकर समाज को जागरूक करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोहन, धन्यवाद रोशन कुमार, सॉरी हर्ष पांडे आई थिंक। सर, I want permission about slot number 1. Rohan is present now. May I call him or I should call third? You may call Aryan. Jaishankar sir. Yes, sir. Go ahead with the Rohan. Not an issue. Aryan? He's again so not present, I think. There's technical glitch. I would like to call slot number 3, Roshan Kumar. नहीं, एक्चुअली मैं उपस्थित हूँ स्लॉट 1 रोहन, मैं उपस्थित हूँ। Okay, Rohan, you may continue. जी, मुझे आप एक बार चित्र दिखा दीजिए, उसके बाद में। चित्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है रोहन, कृपया ध्यान दें। जी, मुझे चित्र देखने के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा ना? शरण्यम ग्रुप पे आपने भेजा नहीं है? जी भैया, करण ने स्लॉट नंबर 1 को भेज दिया था। चलिए कोई बात। Aryan, what is the rule? Means first of all, you are forwarding the picture to WhatsApp group of the participant, and then they are talking, or extempore they are talking? No, sir. On 2 minutes before we are sending pictures for thinking, so that no time will be wasted here. But there's Rohan was not present at the moment. That's why this is happening. Okay. तो बेटा प्लीज मेक श्योर कि और किसी के साथ ना हो, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग डिले ना। Yes, sir. डायरेक्टली कॉल करके उनसे कंफर्म कीजिए। Sure, sir. We'll keep that in mind. रोहन आप प्रारंभ कर सकते हैं, मुझे प्रतीत होता है 2 मिनट हो चुके। जी, मेरी मतलब 2 मिनट हो गए मेरे पूरे। जी, मैं 3 2 1 कहूंगा तब आप मेरे को समय शुरू करिएगा। एक बार टाइमर दिखा दीजिए मेरे को स्क्रीन पे, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मेरा पिक्चर में क्लैरिटी हो चुकी है। एक ही साथ रोहन 2 चीज प्रदर्शित नहीं की जा सकती है उसके। अच्छा, मतलब आप स्क्रीन पे टाइम प्रेजेंट नहीं करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। हम मैसेज बॉक्स में लिख देंगे, आपको सचेत रहना होगा। जी, तो जब 2 मिनट हो जाए तो आप एक बार मतलब लिख दीजिएगा और 2.5 मिनट होते ही मतलब मैं समझ जाऊंगा, यानी 2 मिनट पे आप मुझे एक बार सिर्फ एक लिख दीजिएगा ताकि मेरे को क्लैरिटी रहे कि मुझे कंक्लूजन पे पहुंचना है। जी अवश्य, आप प्रारंभ कीजिए। जी 3 2 1 से शुरू करेंगे। 3
दो एक सभा की गरिमा को नमन। जो चित्र दिखाया गया है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं दो मुख्य चीजों के बीच में विभेद करने की बात करता है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था, दूसरी तरफ पैसा। यानी कि अंग्रेजी शब्दों में कहा जाए तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट और मनी इज इंपॉर्टेंट। मूलतः हम यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि कैसे वर्तमान परिदृश्य में जब आप वैश्वीकरण के दौर में है तो अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि जो आपके लिए पैसा है वह बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वहीं पे आपको ये भी समझना होगा कि जब तक आपके पास ज्ञान की जो ज्ञान का एक मूल आधार है, जो ज्ञान का मूल स्रोत है, तो आप अपने आप में अपने उस चीज को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। जब आप वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण के अंदर कई सारी चीजों का बेरोक-टोक प्रवाह होता है। उन बेरोक-टोक प्रवाह के अंदर केवल पैसों का प्रवाह नहीं होता, अपितु आपके साथ ही साथ जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके प्रवाह की भी बात हो रही है। इस विषय के अंदर अपने आप में एक तराजू के तौर पे जो चीजें दिखाई गई हैं, या कहा जाए सीढ़ीनुमा संरचना दिखाई गई है, वो दिखाता है कि कैसे जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपने आप में कैसे उस तराजू के तौर पे जो ज्ञान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि पैसे के। साथ ही साथ समझने की आवश्यकता है कि क्यों जो व्यक्ति विशेष है या किसी भी मानव इकाई के लिए जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो एजुकेटेड हो, शिक्षा व्यवस्था में कुशल हो। क्योंकि जब आप किसी भी देश की जो एक मानव एक जीडीपी को काउंट करते हैं या राष्ट्रीय आय को काउंट करते हैं तो आप उस देश की जो लेबर है, जो भी जो एक श्रमिक है, वो कुशल श्रमिक की मांग करते हैं। वो कुशल श्रमिक अपने आप में कुशल तब होता है जब उसके पास ज्ञान का एक महत्वपूर्ण जो एक साधन है या फिर एक ज्ञान की सीढ़ीनुमा संरचना प्राप्त होती है। और जब तक वह उस ज्ञान की सीढ़ीनुमा संरचना को प्राप्त नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं वो उन चीजों को या उन संसाधनों को मुख्य धारा में प्राप्त नहीं कर पाता। इस चित्र को देख के मेरे दिमाग में एक और चीज क्रिएट होती है, वो ये कि कैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का निजीकरण है वो भी आपको देखने को मिलता है कि कैसे जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते। उदाहरण के तौर पे जो वर्तमान का एनईपी आता है वो भी इस चीज को देखते हुए आप उस चीज से रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे जब वर्तमान एनईपी आया है तो अपने आप में वहां बात की जाती है कि आप डिजिटल इंस्टीट्यूट खोलेंगे या डिजिटल कॉलेजेस खोलेंगे, जो विदेश के बड़े बड़े कॉलेज संस्थान है वो यहाँ पे आके अपना कॉलेज स्थापित करेंगे। तो अपने आप में जब विदेश का कोई चीज यहाँ पे स्थापित होगी, जब विदेश का निवेश होगा तो अपने आप में वो जो लोग हैं वो चीजों को बहुत ज्यादा महंगा कर देंगे। तो इस विषय को इस चित्र को देखते हुए मेरे दिमाग में दो अलग अलग चित्र आए। एक तो ये कि जो अपने आप में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कि शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या पैसा। दूसरा ये कि कैसे अपने आप में जो एक शिक्षा की जो व्यवस्था आज की बन चुकी है, जो उसकी सीढ़ी है वो पैसों से होकर जाती है। अपने आप में जिस शिक्षा को हम हमेशा कहते रहे कि जो शिक्षा है वो बाकी चीजों के लिए एक पार्ट का कार्य करेगी, जो शिक्षा है वो उस अमीर और गरीब की खाई को पाटने का कार्य करेगी, वो कैसे ही वर्तमान के दौर में वैश्वीकरण के दौर में अपने आप में उस खाई को और बढ़ाते हुए जाती है कि कैसे जो कुछ लोग हैं या कुछ समूह हैं वो अपने आप उसको प्राप्त कर पाते हैं। और जो चाणक्य का वेलफेयर का स्टेट जिसकी संकल्पना भारत में रखी जाती है, फिर 1947 जब संविधान सभा बना उसमें भी रखी जाती है, वो Your कहीं ना time, कहीं sir. टाइम पे थोड़ा फेलियर होते हुए दिखता है। समय की सीमा के साथ धन्यवाद। धन्यवाद रोहन। अब मैं इसी के साथ स्लॉट नंबर 3 रोशन कुमार को बुलाना चाहूंगा। यस, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप इस छवि में देख सकते हैं, यह छवि जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो बिल्कुल ही किसी भी समाज में जो महिला होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति या पड़ाव को पार करती है, जो कि एक माँ की स्थिति होती है। और माँ की जो ममता होती है वो एक बच्चे के लिए निश्चित रूप से बहुत ही ज्ञान ज्ञान का कार्य करती है, और समाज में सबसे अच्छी चीज उसके लिए वही होती है। इसमें ये छवि बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है कि कैसे एक माँ अपनी जो मेहनत और ज्ञान रूपी पंख से अपने बच्चे की कल्पना को उड़ान देने का प्रयास करती है, और वो अपने आदर्शों को और अपने सभी अच्छी अच्छी चीजों को अपने बच्चों को मजबूत पंख रूपी में देने का प्रयास करती है, जिससे उसके बच्चे में जो एक दृष्टिकोण है वो समाज के प्रति सही रहे और समाज में सही तरीके से कार्य कर सके और आगे बढ़ सके। समय किसी भी देखते हो, धन्यवाद। धन्यवाद रोशन कुमार। Now I'd like to call Mohini Rai, if he is present here. Slot number 4 is not available at the moment, so we now move towards slot number 5, Unnati Baranwal. Unnati Baranwal. उन्नति बरनवाल Yes, sir. उपस्थित हैं? Yes, sir. जी, Am प्रारंभ I करें। visible? यस, Okay. So like मैं 3 तक काउंट करूँ, then उसके बाद आप you guys can start that your timer after that. ओके। Okay. Can I get a minute? आपको सही समय पर प्राप्त नहीं हुआ था? No, I got it a minute late.
You can take one, just be quick. Pardon? Please, can you repeat? You can take one, just be quick. Okay. Fine. Unnati, you have to start now, please. Okay. So first of all, a very blissful good afternoon to all of you. I am Unnati Baranwal from Shahid Bhagat Singh College, and yes, now I can start. So this picture actually shows that. The woman who is sitting on the rickshaw puller is with that man despite of his economic and financial situation, and the man is also working very hard so that he can manage a living for both of them, and the and it also shows that how strong their bond is, and how strongly these people both these guys are connected with each other despite of whatever their financial situation is, which shows that humanity is actually greater than their financial status. And it also shows that how that lady is protecting his husband while he's driving that rickshaw puller, and that kind of love, that kind of devotion, and sorry, that kind of affection both of them share with each other, and their understanding and the kind of maturity that women has is commendable. And also in return, that man is working so hard for her so that they can in order to earn a living for both of them. So thank you, that was it from my part. Thank you, Unnati. Thank you, Unnati. Now I'd like to call slot number 6, Bankim Chandra. Slot number 6, जी, Bankim Chandra. क्या मैं उचित रूप से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? जी। एक बार कंफर्म कर दीजिए। मेरे 3 2 1 कहने पर आप समय शुरू कर दीजिएगा। जी। 3 2 1। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बंकिम चंद्र आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय से आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ। मित्रों, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, इस तस्वीर के 2 पक्ष हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जहां तक हम इसके सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें तो एक व्यक्ति अपने से गरीब व्यक्ति को, समाज के एक वंचित वर्ग को मदद करता हुआ दिखाया गया है। परंतु इससे कहीं बड़ा एक नकारात्मक पक्ष है मित्रों, क्योंकि जब हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मित्रों, हमने अपने संस्कृति में देखा है कि महाराज शिवी ने अपने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा दी और यह किसी को पता चलने नहीं दिया। तो यह दान करने की सोच होती है। परंतु यहाँ जो दिखाया गया है, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दान तो कर रहा है, परंतु वह एक मानसिक रूप से इतना कुंठित व्यक्ति है कि वह उसे समाज में दिखा करके अपनी पब्लिसिटी करना चाहता है और इससे समाज में एक प्रतिष्ठा बनाना चाहता है। शायद वह समाज में यह दिखाना चाहता है कि मैंने एक व्यक्ति की मदद की, एक परिवार को मदद किया। शायद वह यह नहीं समझ रहा है कि उसने इसी समाज के संसाधन से अपने आप को परिपक्व बनाया है, अपने आप को समर्थ बनाया है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी योगदान है। महोदय, यह भी हम देख रहे हैं इस तस्वीर में कि एक जो असमानता है समाज में, वह किस प्रकार से दिनों दिन फैल रही है।
जहां एक व्यक्ति पूरी तरीके से भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त दिखाया गया है, तो वहीं दूसरा परिवार जो है पूरी तरीके से वंचित दिखाया गया है। न तो उसके पास खाने को है, न तो उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े हैं, और उसके बच्चे भी पूरी तरीके से जो है माल न्यूट्रिटेड दिखाए गए हैं, माल नरिष्ठ हैं। उनके पास न तो खाने को है, न तो रहने को है। परंतु जो दूसरा व्यक्ति है वह पूरी तरीके से संपन्न है, परंतु उसके जो मन मस्तिष्क में जो कुंठा है वह उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए अंततः यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो शास्त्रों में, हमारी संस्कृति ने हमें सिखलाया है कि नेकी कर दरिया में डाल, और जो हम नेकी करते हैं, जो हम दान करते हैं, उसे अगर एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हम इस भावना के साथ दान करें और आगे बढ़ें, तभी समाज में अच्छाई फैलेगी, तभी समाज में सारे और संस्कार फैलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बंकिम। अब मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगा स्लॉट नंबर 7, सुभी वैश्य। जी, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? जी। और मैं जी दिखाई दे रही जी जी जी, मैं 3-2-1 में शुरू करूंगी। हमारे पास समय 2 मिनट का है ना? हाँ, 2 मिनट, और आप हाफ अ मिनट, मतलब 30 सेकेंड्स आप कंक्लूड करने के लिए ले सकती हैं, मैक्सिमम 2.5 मिनट्स। तो आप मुझे टाइम पूरा होने पर बताएंगे? जी जी, ठीक है। ये मैं शुरू करती हूँ। सदन की गरिमा को मेरा नमन। मैं शुभी वैस, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय से। जैसा कि ये चित्र आप देख सकते हैं, ये हमारे समाज में आज चल रहे बच्चों के साथ जो हो रहा है उसको दर्शाता है। ये दर्शाता है कि जब कोई एक बच्चा समाज में जन्म लेता है तो उसको एक अच्छी दिशा देने के लिए हम उसको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि आज शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, जिसके कारण जो अभिभावक होते हैं या जो स्कूल के लोग होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है और उसके हिसाब से हमें उसे कितनी शिक्षा देनी है। एक बच्चे को हम किताबों के बीच में तो लाते हैं, लेकिन उस किताब के तले हम उसको इतना दबाने लगते हैं कि अगर एक 5 साल का बच्चा है तो उसको कई बहुत ज्यादा चीजें सिखाने लगते हैं, और जिस वजह से वो उसको एक तरीके से बोझ समझने लगता है, और कहीं ना कहीं वो उसको चीजें और वो उसमें उसके तले दबने लगता है। हम आज देखते हैं कि जो जैसे कि अगर हम बात करें कि कोटा को आज भारत में सुसाइडल सिटी के बारे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे 10-12 में पढ़ रहे बच्चों के पास प्रेशर इतना ज्यादा दे दिया जाता है कि बच्चे उससे उबर नहीं पाते, बच्चे उसको झेल नहीं पाते, वो सही और गलत का फैसला नहीं ले पाते। उनको लगता है कि अगर वो इसमें पास नहीं हो पाएंगे, इसमें अगर इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उनके पास कुछ और बचेगा ही नहीं, जिसके कारण हमारे समाज में सुसाइड, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड जैसी चीजों को कर रहे हैं। तो इसमें हम ये जो चित्र है ये हमें ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि एक बच्चे को बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान के द्वारा मूल अधिकार है वो भी ये कहते हैं कि एक बच्चे को उसके उम्र के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, और जो उसका स्तर है और उस हिसाब से जो एजुकेशन है उसको डिवाइड करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके गलत प्रभाव को दिखाता है और ये बताता है कि हमारे समाज में हमारे अभिभावकों को व समाज के लोगों को इस चीज का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि बच्चों को ये बताना जरूरत है कि शिक्षा लेना व शिक्षा पाना और बहुत आवश्यक है, लेकिन उसमें दबना, उसकी वजह से कोई गलत कदम उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभी। अब मैं बुलाना चाहूंगा स्लॉट नंबर 8, ओजस्वी गुप्ता। Yeah, before my ओजस्वी timer गुप्ता। starts, a very good afternoon to the honorable judges and to the entire August gathering. This is Jasvi Gupta and I shall proudly present my views. Honorable OCs, kindly start my timer at the count of 3, 2, 1. Education is to know that tomato is a fruit, while wisdom is knowing not to put it in a fruit salad. Well, I think the picture that you all can see in screen, it very righteously depicts the present situations. So what all of us, we've grown up playing games, but the kind of games they are in stark contrast to the games which the students of present generation play. These people, they play on phones and on video cameras, video games, and this is how their lives are confined. But we or our parents, they've grown up playing very simple games, and one of these games include the marble game, the one that can be seen in the picture as well. So according to me, that marble represents the different social media platforms like Instagram, Facebook, LinkedIn, and YouTube.
And we can also see a book is kept aside in the picture. So the child is basically focusing on the social media platform and he has neglected the importance of education. And this is exactly what is happening in the present generation. Probably we as students, we in the advent of social media, we have neglected so many things, and we don't understand that when it comes to social media, it's a dialogue and it's not a monologue. And some people don't understand that social media is more like a telephone than a television. It is simply keeping us away from the reality and probably the truth and the things which are more important to us, that is our education. It is keeping us distant from it. Most people, they use social media in order to impress people, but I believe the correct use of it should also be very important, that is to create an impact in the lives of people. Especially in the age of COVID, we've seen that the use, our dependence on mobile phones has increased manyfold, and that has been one of the prime reasons why social media has rose to power a lot after COVID as well. So with that, I believe all of us, we should again go back to our roots and understand the main things. And definitely education is extremely important, and that can only and in the better way it can be covered through books itself. So thank you so much for your patient hearing. Thank you. Thank you, Jashri Gupta. I would now like to invite slot number 9, Ayushi Saha. Ayushi Saha. Am I audible? Yes. Okay. So greetings everybody. So myself Ayushi Saha from Daulatram College, and so this picture depicts actually that how one blind person and in the queue whole the queue is following him. So this picture actually depicts that evidence of senses, and the first one human, which is act as a torch bearer for the whole queue. So this picture is believing blindly, is believing something without any reasonable, any constructive reason. So like believing blindly is anticipating something to be true. So anticipating something to be true, where in the reality the likelihood of it being true is purely guesswork. Purely is a guesswork. So how means in this picture depicts like everyone is following. We can also say the crowd which we are following without any reason, without any specific reason. Even we don't have that ability to. Even we don't have the ability to against that voice. If anything is going wrong with me, anything who is dominating me, but we don't but even a single person in the queue or in the community is not able to raise their voice against this, because everyone have their respect, everyone have their, but no one want to come in front of that to lead that. But what we are doing actually, we are following the crowd. And as a student we also actually as a student we are also, if I take the example, like we are running for the competition to top any course, to top any crack any competitive exam. So we are also the part of this blindly believing in something without any reason. So thank you everyone. Thank you, Ayushi Saha. Now, with this, I would like to call slot number 10, Mansi Prajapati. नमस्कार, मेरा नाम मानसी है और मैं दौलतराम महाविद्यालय की छात्रा हूँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो हमें दृश्य दिखाया गया है, इसको मैं शीर्षक देना चाहती हूँ शिक्षा या बोझ। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता-पिता जो है एक बच्चे के बस्ते के ऊपर बैठे हुए हैं और वो अपने हाथ में बच्चे को एक लगाम से कसने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है एक तो उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ है, उसके साथ-साथ उसके माता-पिता जो हैं वह उसको उसी दिशा में टालने की कोशिश कर रहे हैं जिस दिशा में वह चाहते हैं। वे नहीं जानते हैं कि बच्चे के अंदर क्या मनोभूति है, बच्चा क्या करना चाहता है, भविष्य में वह अपने सपनों को किस प्रकार से जीना चाहता है। परंतु जो माता-पिता हैं उसको पढ़ाई के साथ-साथ उसके
उसको अपनी दिशा में जो है वो डालना चाहते हैं। इसका एक अनुपम उदाहरण होगा कोरिया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोरिया में एक एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही सीसेट एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। और जो सीसेट एग्ज़ाम में जो बच्चे हैं वे 8 घंटे का वो एग्ज़ाम होता है और वे पढ़ाई करते हैं 8 घंटे। उसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वह बच्चा उस एग्ज़ाम को पास करके आगे बढ़े। उसके बावजूद भी जो बच्चा है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि कोरिया के आज हम फर्टिलिटी रेट को अगर देखें तो वह बहुत कम है और कोरिया जो है लोड फर्टिलिटी रेट में तीसरे नंबर पर आता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा चाइना। चाइना जो है उसमें भी इसी प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो उनके अनुसार आगे बढ़े। बच्चे को अपने सपने जीने का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। बच्चा किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहता है उसको नजरअंदाज करते हुए माता पिता जो चाहते हैं उसके अनुसार बच्चे को वह ढालना चाहते हैं। हाल ही में हमारे भारत देश में भी इस पूरी जो दृश्य है उससे रिलेटेड एक मूवी आई थी थ्री इडियट, जिसमें अच्छे से भी बताया गया था कि किस प्रकार जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से घोषित किया जाता है आईआईटी और डॉक्टर्स बनने की लाइन में। और आज तो यूपीएससी जैसा फेमस एग्जाम जिसने इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है, तो जैसे में माता पिता चाहते हैं कि वह अपने बच्चे को अपने अनुसार ढाले और बच्चा इसमें सही गलत की सोच ना करते हुए जो उसके माता पिता चाहते हैं उसी निर्देश में बढ़ता जाता है। अपने समस्त जो तथ्य है उनको समेटते हुए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चे को खुला छोड़िए, वह अपने सपने जीने का अधिकार रखता है तो उसे जीने दीजिए। धन्यवाद। Thank you, Mansi. So with this, now I'd like to call slot number 11, Ashish Kumar Sarma. Ashish Kumar Sarma. Hello, am I audible? Am I audible? Yeah, yes, you are. Okay, so my name is Ashish. I am from Motilal Nehru College, and please start the timer in three, two, one. So there is a famous quote: "Without a free and independent media, true democracy is unattainable." And Abdul was a child who wanted to be someone who could do that as well. So he studied about democracy, studied about journalism, and he was placed in a top tier media company. And Abdul was given the job of an anchor. So one day, Abdul got a news while sitting in his media room that he wanted to report about an incident where somebody raised slogans against the country. Okay, so that was a huge news, and so yeah, he got the material and he started, on air, 3, 2, 1 on the count of 3, 2, 1. He started telling the news, and the person who was accused was Saf. And who was Saf? Saf was an activist who was working about corruption, against corruption, and the only fault was that Saf raised finger at someone who was in the ruling party. So okay, he was paid by the media company to report it. So Abdul reported it, and the next day, while coming from the work, he went to his home only to find blood in his house. What was that blood? That blood was his own brother, and that was the catch. Saf was his own brother, that was of Abdul, and Saf was an activist, and the only problem was that he raised for the people, he raised his voice for the people, had he held accountable the ruling government, and that was the only problem. He was labeled as anti-national, he was labeled as anti-India, and that was the day. Then it was too late that the mic that he was holding would lead to the murder of his own very brother. And that was the day when Abdul and Saf made an example that how big is this vicious circle of journalism and democracy. Thank you very much. Aryan, your mic is turned off. Sorry. So thank you, Ashish. So with this, I'd like to call Swati Krishna. Yeah. Hi, my name is Swati Krishna, and I'm a student of Daulatram College. So, in the contemporary world, every single minute, around 2,400 trees are being cut down. And this is a pictorial depiction of where all these trees and all these restrictions are going in for what it's being done. So, like in this world of industrialization and like boosting economy and creating or developing technology, because it's being non-sustainable, it's also affecting our nature in a big way. And we are doing this in order to build things that are not good to the environment, that is harmful to the environment. So it's the nature, it's the forest that provide for us, and we are using this energy in order to build something that in turn destroy the nature and in turn will destroy the human itself.
and that is the biggest mistake we are making nowadays. And also the contemporary my people's mindset being directed towards boosting the economy and development and technology. We are forgetting nature, we are forgetting soil, we are forgetting environment. And the thing is, I think we should go back to our roots, we should go back to nature, and we should think about what should be a priority. Should it be the life, or should it be the lifestyle? Should it be the status, or should it be, like the life and the roots? And I think the priority should always go to what is sustainable and what is good for life. Thank you. Thank you, Swati. Now, slot number 13 is not present. So move towards slot number 14, Anjali Kumari. I hope I am audible and visible. Yes, yes. Okay, so should I begin on the count of three? Yes. Okay. Sure. So 1, 2, 3. Okay, greetings everyone. I am Anjali Kumari, a first year BA Honors Political Science student from Kamla Nehru College. So, what comes to my mind very first when I say this picture is like when we were kid, we were always taught that do not take anything when to eat if any stranger offers you that. So it was done so because as a child we are not believed to be so good at our thoughts and our ways to understand how a person is. But this thing doesn't go very blank when we even if we grow up, because often the stuffs are not same as it is shown. Sometimes it is presented it's in some other way. I have two very broad examples in this scenario. The first one is politics. Whenever the elections come and the campaigns begin, there are the politicians who offer you various, you can say it is a candy, or the things that they will do this for you, that for you when they'll win. But the scenario is something different when they come into the power. Also, the second, as a teenager and as like college students, we should keep in mind when we look into Bollywood, they present world as a very as a stuff of fairy tale where everything is perfect, things are going good, but it's not so. So as a citizen, as a student, as a child or anything, we need to keep our eyes open and decide what we believe in, because things may look tempting and be but maybe prove fatal later. So it's we are the stakeholder, we are just someone responsible for things to come in our mind and should like what are we are believing in. Thank you. With this I would like to wrap up. Thank you very much. Okay, thank you, Anjali. With this, now I'd like to call slot number 15 is not present, surname. So we'll move towards slot number 16, Deepika Dikshit. मेरी आवाज आ रही है? जी जी, तो मेरे 3 2 1 कहने पे आप शुरू करिएगा। 3 2 1। नमस्कार, मैं दीपिका दीक्षित, नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की छात्रा हूँ। जैसा कि इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि एक बालक का चेहरा बना हुआ है, जिसके मस्तिष्क को एक एंग्री बर्ड नामक गेम जो है वह गेम आधा खा गया है। उसके हाथ में उसका फोन लग रहा है और फोन में भी वह गेम खेल रहा है। यह जो दृश्य है, यह हमारी आज की नई पीढ़ी के, हमारी नई जो हमारे बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके मस्तिष्क की, उनकी जीवनी की बहुत ही दुखदायी स्थिति को दर्शाता है। आज के समाज में क्या है कि जो बच्चे हैं वो अपने खेलों से, फोन से इस प्रकार से उन्हें लत लग गई है इन चीजों की कि वह उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार इस दृश्य में पता लग रहा है कि वह जो खेल है उसके दिमाग को, उसके मस्तिष्क को पूर्ण रूप से आधा खा चुका है, जिससे यह प्रतीत होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो ये गेम है, जो ये खेल है, इन्होंने बच्चों के मस्तिष्क को पूर्णतया से बिल्कुल ही खराब कर दिया है। जिन बच्चों के दिमाग में नई उमंगें, नई किरणें, नए तरीके, नई सोच उपलब्ध होनी चाहिए थी, नई सोच को जन्म देना चाहिए था, वह सोच, वह मस्तिष्क तो यह खेल खा गए हैं। यह अगर चलता रहा, अगर आज यह नहीं रुका, तो हमारी जो नई पीढ़ी है उसका भविष्य पूर्णतया तबाह हो जाएगा। उसका भविष्य अगर एक देश में बच्चों का ही अगर विकास नहीं होगा, तो फिर उस देश का भी विकास नहीं हो सकता। तो इसे पूर्णतया हमें आज ही रोकने का प्रयास करना चाहिए, आज ही हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अगली प्रतिभागी, स्लॉट नंबर 17, सुभानी मित्तल। सुभानी मित्तल। Are you present here, Subhani? Am I visible? Yes.
Can you show me when it's 1 minute 30 seconds? Okay, we'll text in the message box. Sure. Okay. Daddy, I want all these things in my life. Please send me some money. No, beta, you have to study because education is the most important in life. But daddy, money makes you powerful. From money, with money, you can achieve anything. Good afternoon, my respected judges, dear participants. As you can see in this picture, there's a man standing at the terminal of the death, the god of death. And what he's taking with him? Nothing. Nothing. And so why we are doing all these things in my life? I just want to tell you guys that when we all die, the only thing that we take with us is the respect. The truth is, we all are at the terminal. When we die at some point of life, we will just take the respect that we have earned during this life cycle. Until we do, we should live the moment that we have with us. We should nurture our relationships. We should love those who are around us and contribute to this world, leaving our mark on the hearts of the people. So if you get a chance to choose between money or other things, I feel like we should always trust and help each others what we can do in our lifetime. Because if we want to change this world, we have to start with ourselves. If you want to do things in your life, you have to start with yourselves. So, before thinking about money, when we die, we won't take money with us, but we'll take the respect and gratitude that we have earned. And I believe that's the hardest thing that we can earn in your lifetime. Thank you. Thank you, Subhani. So with this, now I'd like to call Satyaki Chaudhary, slot number 18. Yes, yes. Satyaki Chaudhary, slot number 18. Am I visible? Yes, Satyaki. Yeah. You may start, please. Okay. A very good afternoon to everyone present here. This is Satyaki Chaudhary from NIT Durgapur. So I'll start at a count of 3, 2, 1. So before nose diving into my interpretation of what the picture is, let us try to understand the elements in this picture. Okay. So this picture is divided into two levels. One is a child of age about 10 sitting with a teddy bear, and the other is a young man who is smiling, probably in front of his friends, his family. We don't really know that. Okay, so firstly, there are a lot of interpretations of this picture, but let me tell you the interpretation that I think is the most suitable one. So firstly, we see the child who is cowering, probably in fear of his parents, because I don't think at that age anybody else would be in his house, torment him or subject him to some kind of torture. So this basically reflects the childhood trauma that this guy has gone through, and he possibly didn't have any sisters or brothers, siblings of any kind. So you can see that he was really lonely, and his only friend was an inanimate teddy bear. Would have probably heard about Calvin and Hobbes, right? Even there's this stuffed toy which was the tiger who kept Calvin company all the time. But here, this guy is not even animate. Like, he doesn't have life, the teddy bear. So he was completely alone. Now, moving on to the guy you can see is totally smiling. Now, this smile and this picture of trauma, both of them contrast. There's a juxtaposition between the two. Okay, so this basically reflects that how there are people in our society who keep smiling all the time, who always ensure that everyone has a good time. But okay, but we need to ask, are they really having a good time? Is everything okay with them? You can see, if you look at his face, you look, it looks like he's smiling, okay, but his eyes, they have lost all the light. They're literally dark. So
all I wanted to say is take care of the mental health of your friends. Ensure that any childhood trauma that they have gone through is, solved through the help of a therapist or, talking to someone. That's all. Thank you. Thank you, Satyaki Chaudhary. With this, and I would like to call slot number 19, Abhyuday Kumar Mishra. जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे जी। जी। नमस्कार आप सभी को। मैं अभ्युदय कुमार मिश्र आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय में हिंदी साहित्य से प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूं और ये चित्र जो मुझे मिला, एक तरह से मैं इसे बहुत जुड़ पाया, क्योंकि समाज में जो भी स्थितियां हैं उस पर जब हम चिंतन करते हैं तो हमें देखने को यही मिलता है। मेरी वो दो लाइनें लिखी हुई कि जंग तो हर जर्रे में जारी है, कि जंग तो हर जर्रे में जारी है, बस मसला ये है तुम कहां जारी हो। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे दृश्य में कि पैसे रुपए के उस बल से उस वो जो जरूरत होती है किसी इंसान की, उससे किसी को रोकने की कोशिश की जा रही है कि हाँ तुम अपना मुंह ना खोलो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं और ये मैं नहीं समझता कि इससे आप और मैं इस सत्य से दूर हैं। ये आज भी हमारे समाज में ये चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके दो पहलू हैं। मैं वो इस चित्र में वो दो पहलू बैठाने की कोशिश करता हूं। पहला तो ये कि एक वो इंसान जिसे पैसे की ही भूख है, वो अपने स्वार्थ में डूबकर किसी का भी हित, किसी के भी हित में ना सोचना, क्या सत्य असत्य, क्या धर्म अधर्म, इन सारी बाधाओं को तोड़ देना, तो वो पैसे से मुंह अपना खुद ही बंद करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस इंसान का हाथ नहीं दिख रहा है कि उसने खुद ये बांधा है या किसी और ने बांधी है उसके मुंह पर पैसों की पट्टी। तो पहला तो एक वो योगदान है और दूसरा ये है कि वो कुछ लोग जिसके बच्चे की फीस, जिसके हॉस्पिटल का इलाज या जो भी, वो दूसरे लोग बांधने का काम करते हैं पैसे उसके मुंह पर, मजबूरी के नाम पर, कि हां तुम्हें अब और नहीं बोलने दिया जाएगा, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये मुंह पर पट्टी बंधी है ये पैसों की, हाथों में जंजीर नहीं होनी चाहिए पैसों की, कदमों में भी कोई जंजीर नहीं होनी चाहिए पैसे की, जो इंसान को आगे बढ़ने से समाज में रोके। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात फिर वही चार पंक्तियां हैं कि साहब बड़ी शिकायतें हैं लोगों की, साहब बड़ी फरमाइशें हैं लोगों की, साहब बड़ी हिदायतें हैं लोगों की, जी साहब बड़ी शिकायतें हैं लोगों की, जी साहब बड़ी शिकायतें हैं लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद अभ्युदय। इसी के साथ स्लॉट नंबर 20 is not present here, so I'd like to call slot number 21, Harshita Patel. Slot number 21, Harshita Patel. Audience and my friends. So I'm starting in 3, 2, 1. For me, this caricature seems to be real because it depicts the reality of our times, especially in these 2 years when all of us got constrained in our own space. This became a reality, a thing which is not a thing of picture but of reality. To me, this bird doesn't seem to be a bird, but an angel or our own soul who is asking us to get out of our own conditioning, out of our own space, so that we can look into the larger picture of how nature is celebration every moment. At the same time, we are stuck in our own world, in our own conditioning, looking for validation from other people who don't even know us, who don't even recognize us. We are looking for likes and dislikes, who liked us, who disliked us, what do other people think about us, what is the new trend, what are other people doing. But at the same time, we are not focusing on what we really want and what we really want to achieve in our life. Sitting in this space where everything seems comfortable, everything which is illusionary, doesn't make us being ignorant of the fact, of the reality, of the beauty which nature has to give us, which the nature has to provide us. We are stuck into the illusionary world of immersive technology, which has taken us away from our own soul. We don't know what is our priority. We don't know what we like. We don't love ourselves. But at the same time, we expect others to love ourselves, others to love us. Hence, I say that we should get out of this conditioning of social validation and look and search for our own self or our own real self. Thank you so much. Thank you so much, Harshita. So with this, now I would like to call slot number 22, Vansika Tandon.
Am I audible? Once, yes, And am I visible? Yes. yes, sure. I noted down a few points, so I'm going to hold my phone like this. It's just the points that I noted right now. Yeah. I'll start in three, two, one. The moment that I saw this image, the first thing that I could think of was the people that I see around me. This conditioning that we have to live our life stuck with this script that has been given by the world, by the society to us. And it feels like these words that I want to say are dangling in my throat. Like the words that I want to say are sitting on my tongue, and uh, I cannot speak them, I cannot say them out loud, and I wait for them to rot. I wait for them to rot until I can finally chip them off, and even if it means that I'm hurting myself, even if it means that I'm bleeding. These words sitting on my tongue, and if you see the anatomy of my tongue, only thing that you'll see is bitterness. We are clipped. We are made to live a life wherein we do not get to think on our own. It feels like my spirit inside is that of a woman who's haunched. So every time I do something that I don't want to do, her back, her spine, it bends a little more. Like I'm living a life which is not really mine. Like I'm being controlled. I'm being forced to do something that I never wanted to do. And I see people around me, not just myself. I have come to realize this, be it my parents. I see them so full of ideas, so full of thoughts, and yet they are forced to do something they are not meant to do. It feels like they're living a life being controlled by someone else and not really their own. Oh, yeah, that's it. Thank you. Okay, thank you, Vansika. So with this, now I would like to call slot number 23, Risika Gehani. Am I audible and visible? Yeah, A very warm afternoon to everyone. I'm Rashita Gehani, representing Enterprise College for Women. My vision towards the picture is what goes around comes around. I would like to share a story of a boy who was scared, who was afraid to face exams. Yes, he cheated, and the next he passed, but he could not retrieve the marks. He cannot gain anything. And later on in another exam, someone copied his answer. And yes, he scored less marks. Then what goes around comes around. You do good, good will happen. You do bad, bad will happen. Sorrows doesn't last forever. Thousand candles can be lit with a single candle. Yes, and that single candle is a backbone. It's the spine of life. Life is all a vicious cycle. We are playing our roles. We are all our protagonists. Pity, sorrow, and those aesthetic principles shattering around, shutting the doors, opening the doors. And yes, it happens. A ray of hope enters, and yes, that gives you the support. And that support is all for your life. Your life is not about just happenings or success. It's about what you do. It's about what you are, who you are, what you perceive, what do you want to give. You give good to the society, society will give you back. It's a simple principle. Give respect, take respect. But all we do is pulling leg each other, letting each other down. Don't do that. Support each other because we all need each other's support. We all crave for the acceptance from the society, from our peers. We all crave for the love. We all crave for the nourishing care. Yes, this is what we need. We are together. Together we are one. And yes, I would like to conclude that if you do good, good will happen. If you do bad, bad will happen. Thank you. thank you, Rishika. With this, I'll move towards slot number 24, Sashwat Tripathi. Am I audible and visible? Yeah, A very warm good afternoon to one and all present here. I am Shashwat Tripathi from Seshadripuram First Grade College, Bangalore.
I'm here to present my thoughts on this picture. When I see this picture, a thought comes into my mind that the darkness lies at the base of the lamp. What do we understand by this? It means that the light, the glamour, always hides the darkness which is ever present. Just take a look at our society. We are supposed to be humans, the peak of the evolutionary race, the perfect being. And what have we done? We have created wonders, we have built civilizations from nothingness, we have built monuments that have stood the test of time. And yet, what we have to say for ourselves? Did we do something? We had self consciousness. It means that we had the power to think beyond ourselves, beyond our baser desires. But what have we done? We have used our knowledges, what have we acquired, what have we got through our genetics, our boons, we have used to create even a worse world. Look at the world now. You see cutthroat competition. Why should I say it a competition? How is it any different than the gladiator matches of the Rome? You fight till your death. One small mistake and you die. Someone gave an example of Kota. I've been there. I've seen what that city does to you. It creates a shell out of a person. And what have we gained? Oh, no, we have gained a high class job. Even the occupation such as a doctor who is next to the god. We say that it's like a god who says lies. And what have we got instead of that? Corporations who suck the soul out of people. And no, but we'll ignore it because the truth is very dangerous. If people are exposed to it, could you live in shame? Could you bear this shame throughout your life? So it is better to stay in obliviousness. This obliviousness is very good. So the choice is yours. Either stay oblivious and with joy, or confront the truth and lead a sad life. Thank you. Okay, thank you, Sashwat. With this, I'd like to call slot number 25, Kiran Bharadwaj. Very good afternoon. Can you see me properly and hear me properly? Yeah, yes. Okay, thank you. My name is Kiran Bhardwaj. I study in Sri Guru Nanak Dev Khalsa College. So I will start count of three. Three, two, one, and go. So guys, this is a beautiful picture in which you can see there are two inmates who are in a prison and they are drawing paintings. But the main thing is the bad one, he only is able to draw the cages, and while the one who is sitting at the other side is able to draw the beautiful scenario which is beyond the beyond the bars. What we get by this, you you can be the thing that you dream to be. You see what you want to see. Just tell me, there. You know what? This picture presents one more thing. This cage is society. Society dictates our thinking very much. Girls are told you are nothing but just housekeepers, etc. Boys are told you are a man, you can't cry, this, that. With this, we are only able to live in the bars. And bars are the ones which are our imagination. Bars are the ones which we can only see. But the ones who break this cage apart are able to live the beautiful life that lies beyond the orthodox society. Can you even believe the kid, the black bards at the window couldn't restrict his thinking? Why? Because he's positive inside him. He has positivity in himself. The ones who are positive from inside are able to look the positivity even in the most negative circumstances. And that's how we should be. Break the societal cage and go out. Please don't mind the bars. Just break them and go to the life beyond that. Your thinking will decide what you are and what you will be in the future. Don't follow the society. It is something today, it is something, it will be something else tomorrow. We don't know, right? You be what you want to be. Don't let the societal bars restrict your thinking. Be positive, stay positive. Thank you and have a nice day. Thank you, Kiran. So, with your permission, may I call slot number 15 because it's over and he's available now. Yes, yes, please go ahead.
So I'd like to call slot number 15, Viraj Joshi. Am I visible and audible both? Yeah, you're not audible. Please check your mic. Am I audible now? Yeah, So my name is Viraj and I'm from Dayal Singh College. So at the count of 3, 2, 1, I would start my speech. 3, 2, 1। इस तस्वीर को देखने के बाद सबसे पहले जो मेरे मन में बात आई वो है कि वह खुद राह चुनते हैं आसमानों की। वह खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। अरे जो रखते हैं हौसला आसमान छूने की, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ना ये एक तरीके से ज़िंदगी को डिपिक्ट कर रही है। एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो फिर भी कुछ नहीं कर रहा, और एक इंसान जिसके पास बहुत कुछ नहीं है, वो फिर भी सब कुछ करने का कोशिश कर रहा है। ये असल ज़िंदगी में भी होता है। हमारे पास सब कुछ होता है, काबिलियत होती है, पोटेंशियल होती है, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। और एक इंसान जिसके पास बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन सिर्फ़ कुछ कर गुज़रने की करेज होती है, वो हम लोग से बहुत आगे बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान आएँगे और हमारे बेड़ा को पार लगाएँगे, लेकिन क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी रुकना नहीं है, ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ज़िंदगी में हमेशा ये सोचना है कि अगर मेरे से नहीं हो पाया तो फिर किसी से नहीं हो पाएगा। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खुद को कर बुलंद इतना खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर तुझसे पूछे कि ए बंदे तेरी रज़ा क्या है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, लेकिन अपने विचारों को नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। thank you, Viraj. So with this, we have now reached the end of today's event. All the participants have been covered. I hope it was an enthralling experience both for the participants and for the audience. Now I'd like to invite the judges Mayank Pandey sir and Jayasankar Sharma sir for their valuable feedback. Okay, so I am only the judge who will give the feedback on the behalf of Chandrakant sir, sorry, Mayank sir. Okay, so Okay, sir. is it okay? Yeah, yeah, sure, sir. Because right now Mayank sir is busy with the compiling of the result. Okay, Okay. so first of all, give us an opportunity to judge this event is also a one type of honor to us. We are really obliged. And the most toughest thing is to judge the event because participants are coming, participants are going, they are expressing their thoughts, their ideas, their originalities, their research work, but the judging of those things are really a tough task. And when Chandrakant sir and Udita ma'am assigned us ki this is your task to judge the participant, so at that time I told them ki one of the most toughest things you assigned us. And why I am so saying so, the way the participant present themselves is really extraordinary, particularly the way they express their thought, their visions, their one type of learning till date, and what they understand about the society. That is really wonderful. Participation is not only important thing is how much you are express your ideas, how much you are express your thought, how you are inculcating the values in your life. That is also very important. Sometimes you know something, but it doesn't mean that you know something is always be benefit to you. One in one slide you saw कि a person is donating something, and on the time of donation or on the time of donating something to else, at that time he or she is clicking a photograph or selfie. What shows this shows the mentality, although he or she was known कि when I am donating something to anyone, at that time what the consequences are, why he or she is donating something to else. So when you are donating something, it means that you should have some type of feeling towards to the society. And when you are showing that feeling towards to the society in the negative way, then whatever you're doing for the society is not appreciated by anyone. That is also very important.
So what I understand from this entire event is this is really a very good event. All of you do a tremendous job. This shows ki how much you have already researched and then display the slides. And the participants are also very knowledgeable one. They participate, not only participate, but they participate for winning this competition. That is the most important thing. Means 1 to 3 will be winner, rest of all will not the winner, but all the participants try their level best, and that is the most important achievement of this event. And I really appreciate on the behalf of Mayank sir also, when we are conversation with this entire topic ki what is going on and how much they are putting their effort. So with these kind words I want to say कि good luck to all the participants and best of luck who are doing their job particularly in this way, so that you also enlighten me as well as other audience. And with these words, and thank you very much to give me an opportunity. Thank you so much, sir. So your words were really inspires to do better. So what should we have to wait for Mayank sir, or we should proceed? No, you should proceed. You should proceed. Just one thing, sir. Slot number 13 is present right now. So, do we have the permission to give him the chance to present himself? 13. Okay, go ahead. Go ahead. Okay. Thank you, sir. Slot number 13, are you present here? हाँ हाँ जी मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर। क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? Just a minute, I will present your slide first. जी I hope the slide is visible. हाँ हाँ जी विजिबल है। मैं शुरू करूँ? Yes, sure. लोहे का स्वाद लोहार से क्यों पूछते हो? लोहे का स्वाद जानना है तो उससे पूछो जिसके मुंह पे लगाम है। आज के वर्तमान के दौर पे जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की विभिन्न क्रियाओं पे मनुष्य का जीवन घिरा हुआ है, और मनुष्य बनता कैसे है? मनुष्य बनता है मनुष्य से समाज बनता है। समाज बनता है दो या दो से अधिक लोगों के आपस में क्रियान्वय से और उनके अन्योन क्रियाओं से। किंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब चार व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके बाद वो एक सामाजिक संरचना, एक सामाजिकता के भाव को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी उन अन्योन क्रियाओं का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर वो एक वर्तमान प्रचलित युग पे, जहाँ पर उनके लिए सोशल मीडिया, आधुनिकता और ऐसे प्रदर्शन जहाँ पर वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं जिससे उनकी वाहवाही हो, उस पर निर्भर करता है। एक यहाँ पर देखना होगा कि दर्शन पे परहितवाद का सिद्धांत चलता है, जहाँ पर बोलते हैं कि आप दूसरों की मदद करते हैं दूसरों के हित के अनुसार। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज के समय पे परहितवाद को भी इन्होंने अहमवाद से जोड़ रखा है, जहां पर आप दूसरे की मदद करते हैं तो उससे पहले स्व की प्रेरणा होती है और उसको दिखाने के भाव पर रहते हैं। अर्थात यहाँ पर सत्य की जो अनुभूति है वह भी इस आधार पर हो रही है कि आप एक फेक इल्यूजन पे जा रहे हैं सोशल मीडिया के दौर पर, और सोशल मीडिया के दौर पर दूसरों की प्रतिक्रियाओं से निर्धारित कर रहे हैं कि आप सही हैं या गलत है। अर्थात सही और गलत का जो पैमाना होना चाहिए था कि वर्तमान समय में सही और गलत की तथ्यता का अनुसार एक लॉजिकल रीजनिंग के जरिए होना चाहिए, वहां पर आप सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं से निर्धारित करते हैं क्या अच्छा है क्या बेहतर है। फिर दूसरी चीज होता है मनुष्य का एक सौंदर्यीकरण समाज और प्रकृति के अनुसार। अगर आप किसी घटना को देख रहे हैं तो उस घटना के सही और गलत का निर्यांकन करते हैं, आप एक स्टैंड लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देते हैं कि यहाँ पर लोग उसको सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर एक उदासीनता आती है, और समाज के लिए उदासीनता कभी भी सही नहीं होती है, क्योंकि उसमें आपको सही और गलत का निर्णय लेना होता है और समाज की भलाई के लिए कार्य करना होता है। फिर आप ये देखिए, एक होता है वाद, एक होता है प्रतिवाद, और वाद और प्रतिवाद के बाद संवाद आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ना यहाँ पर वाद हो पा रहा ना प्रतिवाद हो पा रहा। यहाँ पर मनुष्य अपने अपने फोनों पर जुड़ा हुआ है और उन चीजों को निर्णय ले रहा है सही है कि गलत है। अब एक चीज देखिए, कष्ट क्या होता है। कष्ट की जो अनुभूति होती है उसको आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरों की मदद करने की बजाय जो कष्ट में है वो अपने कष्ट का बखान कर रहा है, और जो कष्ट में है और उसकी मदद करने की बजाय लोग उसकी फोटो या रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो ये कार्य कर रहा है उसको भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अर्थात समाज की इस प्रक्रियाओं में और
इस चयन पे ना ही अन्योन क्रियाएं हो पा रही हैं और व्यक्ति अपने अपने आधार पर कार्य करे, जिससे समाज में संघर्ष स्थापित होते हैं और समाज का विकास भी संभव नहीं हो पाता और व्यक्ति का विकास भी नहीं संभव हो पाता, क्योंकि व्यक्ति के लिए मानवीय मूल्यों के उन्नयन का आधार का होना आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। If Mayank sir is present now, sir. Sir, would you like to speak? So, Jaisankar sir, can you confirm Mayank sir will tell anything? Yes, Now you can proceed, you can please. proceed. Okay, so we are waiting for your feedback, Mayank sir. Sorry, Aryan. Sir, we are waiting for your feedback. Uh, uh, Thank you, Aryan. Thank you, Sharnim, Chandrakant sir, उदिता मैम, आर के पांडे मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से जयशंकर सर ने कंक्लूड कर दिया है। मैं सभी बच्चों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अभी हम हाल ही में जल्दी से हम और जयशंकर सर अपना रिजल्ट कंपाइल करेंगे और फिर हम चंद्रकांत सर तक कन्वे कर देंगे। थैंक यू। Thank you, sir. So now I'd like to invite Sharnyam to propose the vote of thanks. I'd first like to extend my heartfelt gratitude towards our principal sir, Dr. R.K. Gupta, who is the navigator of this flagship of knowledge. His guidance and wisdom have been fundamental in making this event a successful one. I would like to express my gratitude towards our honorable judges, Dr. Mayank Pandey sir and Dr. Jaishankar Sharma sir. We are honored to have you both as a part of our event. I would like to extend my gratitude towards Udita Agrawal ma'am for guiding and motivating us at every point of time. We are blessed to have you with us, ma'am. I'd also like to express my gratitude towards Chandrakant Kushwaha sir and Rajkumari Pandey ma'am, who have been tirelessly working behind the scenes, paying attention to every small detail. Last but not the least, I, on behalf of the Cultural Committee of P.G.D.A.V College Evening, would like to thank all the participants for gracing this event with their sheer creativity and intriguing thoughts. I hope you all had a wonderful experience. Thank you. Thank you, Sharnyam. So we may conclude, sir. Now, the results will be sent in the group or you will be announced here, sir. जैसा कि बेटा अभी सर ने बताया, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। ठीक है, दे विल सेंड द रिजल्ट टू अस, देन वी विल कंपाइल द रिजल्ट्स एंड देन वी विल अनाउंस इट ऑन द ग्रुप। सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स जस्ट स्टे ट्यून्ड। ठीक है, यू विल बी शॉर्टली इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजल्ट्स। Congratulations to Sharanyam and Aryan Madhav for organizing this successful events, and also the pictures were amazing. They were so resourceful and researchful. Udita ma'am, do you want to say something about their work? No, it's fine. Somehow, might be. I was expecting, but the pictures were of that type. That was an extempore speech of kind of thing. Somehow, I was looking for some creativity in pictures, storytelling style. But might be I'm not from the literature. Might be I'm wrong. But I enjoyed that the explanation given by the participants. I was enjoying how they explain through a picture. That is wonderful. I really enjoyed that. That was a wonderful competition. Congratulations to the team and all the best to the participants. So with this, we so would much, like to ma'am. conclude the meeting. Yes, Aryan? Yes. I'm asking for permission to end the meet there. Yeah, so sure, maybe sure. end meet. Okay. Thank you so much, everyone. आपके कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, वो बताएंगे। Yes, sir.
हम भी आपसे परमिशन ही मांगने वाले थे और ये सब जो हो बिल्कुल पाया। बिल्कुल जी, अगर आपका कार्यक्रम संपन्न हो गया, बाकी अगर आपके में से अथना में से कोई कुछ बोलना चाहे, लेट अस टेस्ट देम. If you want to continue, I don't mind. You can show the picture to Siddharth and let's see how he explains the picture, or to Aryan Madhav or to Sharanyam. Let's see how they explain the picture. That can be done if you want. That is up to you. Okay. Yes, ma'am. That is up to you. ठीक है, ठीक है. Okay, participants, we can end the meet now. Yes. Whosoever is controlling the meet, you are requested to please end the meeting. Thank you, sir. Thank you. Siddhartha, you have to end the meet. Oh, I'm sorry. I forget about that. Yes.